This dialogue takes place between a solicitor and a man who was seriously injured by a falling tree branch in a public park. He is seeking damages from the council. The dialogue begins now. Good morning. It is quite an unusual case. Would you like to give me some background, please? मुझसे मिलने का शुक्रिया। कुछ माह पहले मैं और मेरा ख़ानदान फोरशोर पार्क में तफरीह कर रहे थे। हम एक बड़े से दरख्त के नीचे बैठे थे जब वो अचानक टूटा और गिर गया। Can you please give me some details of the injuries you sustained? मेरा ख़ानदान सदमे में था लेकिन उन्हें चोट नहीं आई, जबकि मैं कई रोज़ हस्पताल में रहा। मुझे सर दर्द और याददाश्त खो जाने की तकलीफ सहनी पड़ी। Did it happen out of the blue? Or was it stormy or windy outside that day? बिल्कुल नहीं, वो एक पुरसुकून दिन था, वरना हम बाहर क्यों जाते। We had a case like this a few years ago. The plaintiff got a substantial payout. मुझे इसकी उम्मीद थी। बाग और वहाँ आने वालों की हिफाजत काउंसिल की जिम्मेदारी है। That case was only successful because the court established that the council was negligent in removing the dead tree. चूंकि वो गिरा था, इसीलिए खतरनाक था। Since all tree branches can be dangerous, we need to carry out a proper inspection procedure. We can only win it if we prove that the council